In case you need any help, let me know. So this completes your exercise 5.1. If you have any questions of any sort, do share. After this, the next exercise is based on pie chart. I'll just give you a little glimpse of this and then we will move on, because this topic is not in your syllabus. We have deleted this. So circle graph is the data being represented in the form of a circle. Circle बनाते हैं, circle represents your whole, and then circle के हम parts कर देते हैं, part में हम represent करते हैं. As you can see, the first circle here is representing the time spent by the child during a day. तो जो ये पूरा circle है, the complete circle will represent the complete day. And if you count all this duration, you will get the whole day. Means पूरा 24 hours का आपको time period मिल जाएगा. You can verify. दिन के 24 घंटे किस तरह से डिवाइड किए गए हैं. 8 घंटे स्लीपिंग के लिए हैं, 6 hours उसके स्कूल के लिए हैं, प्ले के लिए 3 hours हैं, होमवर्क के लिए 4 hours हैं, और बाकी सारी जो एक्टिविटीज हैं मिसलेनियस वो 3 hours के लिए हैं. And you can count the time duration for all of these activities, totals up to 24 hours, which represents the whole day. So the whole circle actually represents your whole day. This is how we do it, but we are not doing it as such. And if we look at the second one, this circle graph shows, or pie chart shows, the age groups of people in a town. कि किसी town में जो लोग हैं उनकी ages कितनी कितनी हैं. So how many people are there with age 0 to 14 years? Means ये infants से लेके 14 years से below वाले लोगों को count कर रहे हैं. There are 30,000 people. Then 15 years onwards, 60 years. Can anyone tell me what kind of class intervals these are if you had attended the classes? 0 से 14, उसके बाद 15 पे चले गए. मैंने 2 words use किए थे. If anyone can like think of what this means. Are these inclusive class intervals or exclusive class intervals? Exclusive? No, these are inclusive. Inclusive means we will be including both the limits. Exclusive में हम upper limit छोड़ देते हैं. Exclusive इस तरह से होता 0 to 14, 14 to 15, then 14 to 60, then 60 to further whatever the value is. Continuous होती हैं exclusive. तो 14 क्योंकि 2 class intervals में आता है, हमें बताना पड़ेगा हम किस में से इसको exclude कर रहे हैं. That's why the class intervals are called exclusive class intervals, because the value which is repeated in 2 class intervals वो एक में exclude कर देंगे हम. और किस में exclude करते हैं? इसमें exclude करेंगे. 14 यहाँ नहीं count होगा, 14 इधर count होगा next one में. But इसमें हम दोनों लेंगे. So infants से लेके the people of age 14 years will be counted in this age group. The people who have completed 14 years of age. उसके बाद 15 years से लेके 60 years तक वो next में count होंगे. उसके बाद 60 years and above. So just simply stating, and the total of this will tell you the population of the town. This actually could be helpful when you're preparing for competitive exams. So you should know what a circle graph or a pie chart is. So instead of representing the data using those bars, we represent the data in the form of a circle. And it looks like a pie. That's why it's called a pie chart. This exercise, although is deleted, so you can write down that exercise 5.2 is deleted from your syllabus. Complete exercise. And then after this, we have the next topic, which is probability. I have already sent you definitions to be written right before your exercise. So we will be going over these definitions before we start with the exercise. आपने last year वैसे किया हुआ है probability. It's one of the most interesting and the easiest topics related to data handling. Statistics related. This is one of the easiest topics that you have. So I will be going over a few terms which will be used while discussing probability, maybe in your class, maybe in higher classes, because you will have probability in 9th and 10th also. So these terms you will be coming across time and again. So first thing we want to know is event. Event क्या होगा? Simply stating, हम probability को बोलते हैं what is the chance of occurrence of an event. The easiest example I could consider here is what's the probability that it will rain today?
कि क्या चांसेस हैं, व्हाट डू यू थिंक? सो इट यूजुअली स्टार्टेड बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स के जनवरी के इस वीक में डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशंस कितनी बार बारिश हुई है, वो स्टडी कितने दिनों की थी और उन दिनों में कितने दिनों में बारिश हुई थी. बेस्ड ऑन दैट आई कैन प्रिडिक्ट, आई कैन मेक अ प्रिडिक्शन कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि आज बारिश हो सकती है. So when you are writing down the chances of occurrence of any event, that is called probability. The probability of any event is written in the form of a fraction always. And before we go further, हम बोल रहे हैं यहाँ पे occurrence of an event. अब event क्या है? Event is simply outcome of an experiment. अब experiment ये है कि हम स्टडी कर रहे हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी ऑन हाउ मेनी डेज इट रेन्ड इन द प्रीवियस ईयर्स. अगर हम पुराने 5 साल या 10 साल की स्टडी करें तो जनवरी के इस वीक में कितने दिन बारिश हुई थी. दैट इज आवर एक्सपेरिमेंट. आउटकम्स होंगी किस दिन बारिश हुई, किस दिन बारिश नहीं हुई. मंडे लाइक ऑन 1 जनवरी नहीं हुई, 2 जनवरी नहीं हुई, 3 जनवरी नहीं हुई. ये आउटकम्स है. बारिश हुई या नहीं हुई, क्लाउडी डे था, stormy day tha, there was a thunderstorm but it didn't rain, like such kind of cases. All these are outcomes. I would take a simple example of an experiment. It could be just tossing a coin. अगर आप coin को toss करते हो, if you toss a coin, that is your experiment. और जब हम coin को toss करते हैं, क्या result आएगा हमारे पास? When the coin lands on the ground, what would you see? You will either see heads or you will see tails. Those are the two outcomes of that experiment. और उन outcomes को हम event की form में refer कर सकते हैं कि heads अगर आएगा, heads is actually the outcome, एक result है experiment का, उस result के आने के chances कितने हैं. In that case, I will say the event is getting heads and I'm going to find out the probability of that event. Let me know if these two terms are clear, what an experiment is, what an event is. Then the next thing is a very simple thing. हम represent करते हैं, हमने अगर लिखना हो, we usually avoid writing this कि हम event को E बोल रहे हैं. Probability is represented in this way. Now consider, I'm just writing down example. If you want, you can write down on your notebook. So experiment, let us say, is tossing a coin. The outcomes, possible outcomes, क्या क्या हो सकता है? We could get heads or we could get tails. क्योंकि coin की एक तरफ heads होगा और दूसरी तरफ tails होगा. इनमें से मैं कोई एक outcome को event बना सकती हूँ अपना. Let E be the event of getting heads. Then what will be the probability of E? मैंने coin toss किया तो क्या chances हैं कि heads आएगा? I would like to write down two things, one in the numerator, one in the denominator. This over here gives you the formula to write down the probability of any event. In the denominator, we write down what is the total number of outcomes, all the possible outcomes of the experiment, जितनी भी हो सकती हैं. Heads के केस में हमने outcomes list की हैं. Can you tell me what is the number of these outcomes? Count करना है आपको, counting बतानी है. In this case, can anyone answer this? What is the number of outcomes, the total number of outcomes? एक heads है और एक tails है. Two. Yes, there are two possible outcomes. और इन दोनों outcomes में से heads कितनी बार नजर आ रहा है मुझे? One. Yes, that's it. Half. 1/2. 1/2 is the probability of getting heads when I toss a coin. Half. 50% chances हैं कि heads आएगा. 50% chances हैं कि tails आएगा. And if I write down the probability of, now I'm not giving it a name, I'm just simply writing like this, probability of getting tails. Same experiment,
सेम एक्सपेरिमेंट में मुझे बताना है टेल्स आने के क्या चांसेस हैं, तो नीचे मैं लिखूंगी टोटल क्या क्या हो सकता है, कितनी चीजें हो सकती हैं। तो 2 चीजें हो सकती हैं जब हम कॉइन टॉस करते हैं, हेड्स आ सकता है, टेल्स आ सकता है, 2 चीजें पॉसिबल हैं। उसमें से टेल्स की पॉसिबिलिटी क्या है, 2 में से एक साइड पे टेल है। एंड एज यू कैन सी हेड्स की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, टेल्स की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। जब आपके एक्सपेरिमेंट में आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी मैच हो जाए, कोई भी एक्सपेरिमेंट लें उसमें हम आउटकम्स के लिए प्रोबेबिलिटी लिखें और वो प्रोबेबिलिटी मैच हो जाए, देन व्हाट वी से इज दैट दोज आउटकम्स आर इक्वली लाइकली. I've written this at the end. Such kind of outcomes where their probability is same are called equally likely outcomes. Likely is something that could happen. So equally likely is the probability of their happening is exactly the same. Going back, there is this term which we use, sample space. Sample space is the collection or set of all possible outcomes of an experiment. There's just correction here. यहाँ पे मेरा एक्सपेरिमेंट था टॉसिंग अ कॉइन, तो मैंने इसकी आउटकम्स को अगर लिस्ट में लिख दिया बना के, तो ये जो लिस्ट बनी है मेरे पास, दिस लिस्ट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. Let us take another example to understand what sample space is. I am now considering the experiment of rolling a dice. Die is singular, dice is plural. एक die, multiple dice. तो अगर मैं die roll करती हूँ, the one you use in Ludo, अगर हम die roll करते हैं तो क्या क्या आ सकता है? स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते हैं सभी? अभी भी खेलते, पहले 1 2 खेलेंगे. 3 4 5 6 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है. It tells you how many steps you will be moving, right? And I think 6 tells you that you can actually start moving, if I'm not wrong. So this list, जो मैंने ये list बना दी है, this list is the sample space. और sample space में जितनी values हैं, उनको काउंट करके मुझे ये पता चल जाएगा टोटल आउटकम्स कितनी हैं. इस एक्सपेरिमेंट की टोटल कितनी आउटकम्स हैं? 6. Yes. This experiment has a total of 6 possible outcomes. And if I had to write down the probability of getting an even number, we would write 3. the total, yes, total in the denominator. Please don't forget that. Total will be in the denominator. And out of this list, pick up your even numbers. Count how many even numbers are there. 2 is even. 3. Yes.